A political storm is brewing in poll-bound and polarized Assam. Badruddin Ajmal, All India United Democratic Front chief, often referred to as the Messiah, has said that Muslims across India are safer than ever before, claiming they have nothing to fear and that Hindus stand with them in this country. But even as Ajmal acknowledged safety under the BJP government, he appealed to Muslims not to vote for the Bharatiya Janata Party, calling for consolidated minority voting against the ruling party. Ajmal said the reason for this political stand is Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, alleging that the Chief Minister has insulted Muslims, though he added that such rhetoric would not weaken the community's resolve. He also turned his ire towards the Congress, its former ally in the 2021 Assam Assembly elections, accusing the Congress of indirectly aiding BJP. Ajmal alleged a tacit understanding between the two parties. He claimed the Congress was giving 100% walkover to the BJP and suggested that the opposition party wanted the BJP back in power. जितना पहले कभी भी नहीं था सेफ है। मुसलमान को कोई डरने की बात नहीं। एक हेमंत बिश्व शर्मा के चिल्लाने से कोई जंगल खाली नहीं होता। चिल्लाने दो, मियां मियां करने दो। हमारे हिसाब से एक मुस्लिम को भी नॉट अ सिंगल वोट बीजेपी को नहीं देना चाहिए। अगर देता है तो ये हमारे कौम का, जाति का दुर्भाग्य। बीजेपी को 100% वॉकओवर दे रहा है। अंडरस्टैंडिंग है और ये मैं खुल के बोल रहा हूँ इसीलिए कि वो बीजेपी को वापस लाना चाहिए। Meanwhile, the Congress has hit out at the Modi government, claiming that no Indian is truly safe under its rule. Congress says this insecurity spans across Hindus, Muslims, Christians alike, and alleged that fear of Muslims is being fueled among Hindus. They also highlighted that incidents targeting Muslims and eviction drives in Assam remain fresh in public memory, raising concerns about governance and minority rights. अजमल साहब कब क्या कहते हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। मेरा विचार में तो देश में, मुल्क में अभी कोई सेफ नहीं है। मुसलमान, हिंदू, ईसाई कोई सेफ नहीं है। ये लोग जो देश के जो मेजॉरिटी हिंदू को डराते हैं, ये बोलते हैं मुसलमान से डर है। और पहलू खान, मोहम्मद अखलाक, असम के एविक्शन हम कैसे भूल सकता हूँ। तो अजमल साहब को उनका बात बोलने दीजिए, लेकिन मोदी शासन में कोई हिंदुस्तानी सेफ नहीं है। All right, let's open this up. Let's go across to our guests. We're joined by Siddharth Yadav, spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Mohammad Faiz Khan, National Convener, Muslim Rashtriya Manch, is with us here in the studio. We also have Champak Kalita, spokesperson of the AIUDF. Good evening to all of you. Mr. Champak Kalita, so when AIUDF says Muslims should not vote for BJP, that's not polarizing, that's not divisive politics? देखिए, जहां तक मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने बोला कि मुसलमानों को बीजेपी को वोट नहीं करना चाहिए, तो इसको आप माजी करीब और हाल में असम का वजीरेवाला मुसलमान कम्युनिटी को जलील करने के Okay, there seems to be a problem. Champak Kalita, there seems to be a problem in that line connecting with you. Let me quickly go across to Siddharth Yadav. फिर मैं आपके पास लौटूंगी. Siddharth, Mr. Badruddin Ajmal has also said that there's a tacit understanding between the BJP and Congress. The minority-dominated areas में BJP बहुत efforts नहीं करती है, and Congress has given a 100% walkover to the Bharatiya Janata Party. Swati, I can't really, find credibility in what Badruddin Ajmal says. But what he is speaking in regard of how the Muslims in our country are feeling, I think that's a lived reality, and that's also, those voices are echoing in the Muslim community, and it's not really a choice for him to not, accept that reality. There's definitely a big change after 2014, and all communities living in this 21st century ka Bharat are feeling more and more safe. The kind of fear mongering all such groups had done, including the political parties who act like political vultures for a certain vote bank, that after 2014, if Modi would come to power, if BJP would come to power, the heavens would fall and this would happen, that would happen, there would be a genocide on Muslims. The Muslims of the country can definitely feel that, it's the other way around. The kind of benefits that they have received from the central government, from the state governments, the kind of progress that they have seen, the more money how they have in their hands now, more and more benefits that they receive. It's a very different
different story altogether. But Siddharth, So it's a he in the live- same breath says Hindu community Muslims के साथ खड़ा है, इसीलिए डरने का कोई बात नहीं. And then after that he takes a jab at Himanta Biswa Sarma saying he keeps on screaming Mia Mia, but that's not going to stop the community from moving forward. नहीं, मैं अगेन स्वाति आई रिपीट, बदरुद्दीन अजमल के कहने से कुछ नहीं होता. जिन लोगों की दुकान ही डिवाइसिव पॉलिटिक्स पर चलती हो, जिन लोगों की दुकान ही सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स पर चलती हो, वो और इसके अलावा क्या कहेंगे? हैव यू एवर हर्ड फ्रॉम बदरुद्दीन अजमल और द लाइक्स ऑफ लीडर्स लाइक हिम से एनीथिंग अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटीज? आसाम के अंदर माइनॉरिटीज के लिए कितने प्रोग्रेस के इनिशिएटिव्स लिए गए, ही नोज वेरी वेल. पॉलीगमी को लेकर के एक लॉ पास कर दिया गया. द मुस्लिम विमेन आर सेलिब्रेटिंग it like anything. They are celebrating how they are getting equal status and how they can, now under the So are you saying that this appeal that Muslims shouldn't vote for the BJP will have no impact on ground? Swati, I think in a democratic setup, nobody can be a ठेकेदार of a vote bank. Unfortunately, what has happened is all these leaders, they only treat the Muslim community as a vote bank. Okay. They only think that, how can we consolidate this vote bank? How can we become the ठेकेदार? How can we call out कि ये आप किसको वोट करिए, किसको मत करिए? The Muslims of this country can decide for themselves. ठीक है. Their improved situation is a lived reality. If they think that, the governments have worked for the betterment, then they can definitely come forward. Okay, and so vote I want for to all take the that across to progressive. Kapil Madan. Kapil Madan, the opposition and the Congress party especially keeps talking about the plight of minorities and how they've come under attack ever since the BJP has come to power. Here's Badruddin Ajmal, a former ally of the Congress, who says Muslims are safer than ever before in this country. Let me just say one thing here. We've all seen when Honorable Prime Minister was campaigning for 2024 election, one kind of phrases he's used. There were, remarks like, one community jo pancher lagate hain. There were remarks like infiltrators and, so on and so forth. If you just do a simple Google search, you will get to know what kind of remarks have been made against a particular community. None other than by our, the biggest leader of the country, the leader who represents the, entire country. So I think my good friend Siddharth here, he wants to talk about the, so-called divisive politics of the opposition, but I think he forgets the entire political plank on BJP is communalism, is polarization. And you can't deny that. Why? You tell me one thing. One statement made by Honorable Prime Minister that, there should be harmony amongst, the two communities. One statement in the last. So what is Sabka You Saath won't Sabka find. Vishwas? What is Sabka Saath Sabka Vishwas? No, Sabka Saath Sabka Vishwas. So if you really have Sabka Saath Sabka Vishwas within the same political campaign when you are just before election, you can't have these kind of statement Okay. does not really reflect. Okay, Sabka Mohammad Saath Faiz Sabka Khan is Vikas. also with us. Mohammad One Faiz hate Khan, crime कपिल condemned मदान by ये the कह रहे Prime हैं Minister. कि मुस्लिम्स हमेशा टारगेट पर रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के. ठीक है, ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को इंसल्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. भारत माता की जय. स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंद जब सीपी में पड़ती है तो सच्चा और असली मोती जन्म लेता है. 77वें गणतंत्र दिवस में मैं यही प्रार्थना करता हूं कि 2047 तक हम विकसित भारत बने और सच्चे मोती की तरह पूरे विश्व में चमके. अब आइए हम मुसलमानों की बात करते हैं. मोहम्मद फैज खान मेरा नाम है. मैंने 15,000 किलोमीटर 30 महीना लेह से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से वैष्णो देवी पूरे भारत की पैदल परिक्रमा की है. 80% टाइम हिंदुओं के घरों में रुका हूं, मंदिरों में रुका हूं, मठों में रुका हूं. सभी पार्टी के लोगों ने मेरा स्वागत किया. किसी ने एक कंकर भी नहीं मारा ये मोहम्मद फैज खान है करके. मॉब लिंचिंग पर बोलने के लिए, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है ये बोलने के लिए सबसे ऑथेंटिक मुसलमान मैं हूं. मुझे किसी ने कंकर भी नहीं मारा. तो ये मुसलमान सेफ है. अरे मुसलमान मैं पूरा भारत पैदल चला हूं और मैं सेफ हूं. देखिए मुझे तो किसी ने कंकर नहीं मारा, पत्थर मिठाइयां खिलाई, मुझे फूल मालाएं पहनाई. मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं स्वाति जी. हाँ. अपने अनुभवों से बता रहा हूं. ये हामिद अंसारी, आमिर खान, ये सब लोग झूठ बोलते हैं. Champak Kalita. Okay, I have to wrap up. But Champak Kalita, Mohammad Faiz Khan is agreeing with Mr. Badruddin Ajmal. Then why is he saying don't vote for BJP? ये बात समझ में नहीं आ रही. अगर बीजेपी के राज में सेफ है मुसलमान तो वोट क्यों नहीं करना है बीजेपी को? देखिए, हाल में माजी करीब में आसाम का वजीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा मुसलमानों को जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है.
एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठ के Okay. इतना गलीज बातें करते हैं आसाम का बजरेवाला, और सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान के जो यहाँ में एविक्शन हो रहा है मुसलमान को चुन चुन के, तो बदरुद्दीन साहब ने जो नहीं, लेकिन बोला ये है आप मुसलमानों को तय करने दीजिए. लेट पीपल डिसाइड फ्रॉम whichever community they belong to who they want to vote for and not. और अगर डिविजिव पॉलिटिक्स की आप लोग बात करते हैं तो फिर ये कहना मुस्लिम कम्युनिटी शुड नॉट वोट फॉर द बीजेपी, इज दैट नॉट डिविजिव इन नेचर? अनफॉर्चुनेटली दैट्स ऑल द टाइम आई हैव, जेंटलमैन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.